Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to discuss this CSIR नेट का क्वेश्चन पेपर है ना। तो उसके कुछ क्वेश्चंस मुझे किसी स्टूडेंट ने आज क्वेश्चन भेजे हैं, तो मुझे लगा कि चलो इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ही ट्रिवियल हैं। सो इट वाज अ मिक्स एज आई टोल्ड इन द वीडियो, बट फ्यू क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, आई मीन वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, अप्लाइड में भी और प्योर मैथमेटिक्स में भी। लेट्स डिस्कस वन बाय वन, ओके। So which first question which I like was, I mean, really good and very basic is to understand the sequence question. So let me write that question first, okay? So just write me that question number 1, and it is, the question goes like this: if f is, so f is a function from natural number to natural number which is bounded, okay? So function is given, natural number to natural number which is bounded, and they are asking something about the function. Okay, well, what you can say about, so they are saying which of the following is not true. The question is saying not true, है ना? कौन सा सही नहीं है, right? तो first option is कि okay, well, the lim sup of fn belongs to natural number. Then lim inf of fn belongs to natural number. Then lim inf of fn plus n, this sequence, ठीक है? This sequence का lim inf belongs to natural number. Then they are saying that lim sup of fn plus n, this belongs to natural number, does not belongs to natural number. तो इसमें से आपको बोला जा रहा है कि कौन सा फॉल्स है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखे हो तो आपको फॉल्स चूज करना है यहाँ पे, ओके? सो ओके, जस्ट सो पहला क्वेश्चन आप देख लो, फंक्शन बाउंडेड है, ध्यान देना। लिम सुप fn के अंदर है कि नहीं, उसका लिम सुप जो सीक्वेंस का आएगा वो n नेचुरल नंबर का मेंबर है कि नहीं, ओके? लिम इंफ नेचुरल नंबर का मेंबर है कि नहीं, एंड देन दे आर आस्किंग अबाउट द fn प्लस n जस्ट सीक्वेंस, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है, डोमेन जहां नेचुरल नंबर हो जाए जस्ट सीक्वेंस, so sequence के साथ just we are adding another sequence, so again we are talking about lim inf and lim sup, and that was the first option. So just go through this, okay? So how one should approach this kind of problems, right? So how to think, what will be our thinking to approach this kind of problems, right? It's very basic. So first of all, you just know what do you mean by sequence and everything, just follow it blindly. Okay, ठीक है, sequence is this. What do you mean by the lim sup and lim inf of all about? It's very basic. So sequence is bounded. So of course, if you have a bounded functions from natural number to natural number, so how does it look like? What is the range set? So the bounded sequence, range set should be bounded, and any bounded subset of natural number is a finite set. Just prove it. It's my suggestion. It's very basic, but still I want you should prove. Why? So I need that answer, and definitely if you try, definitely you are going to do that. I know that. So just prove this, okay? Okay. So range of f is finite. So once you have a certain set is finite, so lim sup is also finite, lim inf is also finite, and all are natural numbers. So of course this is true statement, this is true statement. Lim inf, this is a bounded sequence, but if you add something, that unboundedness, this will become unbounded, right? So this is not belongs to, so this is the false option, or it does not belong to, and is correct. So this is the false option. देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, but you know how to approach this. So only one thing, the fact we are using that if function is natural number to natural number, if any sequence जिसके टर्म्स नेचुरल नंबर से हैं वो अगर बाउंडेड सेट है, अगर वो बाउंडेड है तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना? उसका जो रेंज सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा. दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव, ओके? एंड दिस इज नॉट ट्रू इन रियल सीक्वेंस. देयर आर रियल सीक्वेंसेस जो कि बाउंडेड है, बट उसके रेंज सेट यू कैन थिंक इट इज can be crazy set, okay? So ठीक है, चलो. So this was the basic, this was the first question which I thought this was very basic. Let's move to the second number question. And second number question is again very much easy. Let me read it while just doing erasing. So second number question goes like this. Okay, well, you have a series and they're asking about the uniform convergence at certain points. So let me do this. So question is, you have a series, question number 2. They are asking about this series, -1 to the power n sin nx divided by n log n, okay? And then they have given the fourth, there are 4 options.
that this series so this series converges only for x equal to 0 uniformly, only for x belongs to minus pi से pi, uniformly only for x belongs to r except n pi, or uniformly for all x. See, this is pretty simple question, right? Just take it this. So here you have the fn x I have given you, right? Minus 1 to the power n sin nx. Well, this is n log n. Just apply the modulus, and this is 1 upon n log n. And n log n is, you can definitely, this is n square for large n. Let's say for all n greater than equal to 5. How? I mean, see, thing is, जो log n होता है ना, तो log n is greater than 2 for all n greater than equal to 5. I mean, 2, 3 बाकी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. So यहाँ से आ गया कि n log n जो होगा वो greater than होगा n square. तो 1 upon log n जो होगा वो n square से छोटा. Now apply Mn test. This series is convergent. So this series convergent uniformly. Okay. So apply Mn test. You will get the result. So the fact I am using here is Mn test. So if you know the Mn test and you know that this trivial result, then things follow very easily. But most of the students have given the wrong answer to it. Okay. It's okay. Chalo, no problem. So this is the second number question. I mean, all questions are like that. Let me read it again. So next question was about the series, and it's asking about the convergence of certain things. But before that, there is one question I can see is about the functions, about the continuity and so on and so forth. Let me write that question first. So the third number question. So question goes like this. So f and g are continuous functions on closed interval 0, 1. Closed interval 0, 1 to r, I think they have given. Okay? Yeah. Real valued continuous function. And with the hypothesis they have given that f of 0 equal to f of 1 is equal to 0 and g of 0 equal to g of 1 is equal to 1. Okay, well, and f of half is greater than g of half. Then they are saying, okay, well, which of the following statement is true? So they are asking about f of t equal to g of t has a common solution or not. That's what they are asking. How many? There is no t, exactly 1 t. There are at least 2 t, and there are infinitely many t's. That's what their question is. Let's go one by one. So from the question you can understand what we have to do. I mean, just take the difference. Just define this function ht equal to ft minus gt. Okay, so this is a continuous function because this is the difference of two continuous functions. So this is the continuous, and h of 0, f of 0 minus this. So f of 0 is 0 and this is minus 1. H of 1, this is 0 and this is equal to minus 1. So h of 0 is minus 1, h of 1 is minus 1. So this is, both things are minus 1. Okay? So, and h of half, what is h of half? H of half is f of half minus g of half, and this quantity is positive. So just plot this point. So here you have 0, here you have 1, here you have half, and 0 you have value minus 1, है ना? यहाँ पे minus 1, यहाँ पे भी minus 1, और half पे value you have certain positive value. So by intermediate value theorem, because this function is continuous, because this is the difference of two continuous functions. So this is continuous. So from 0 to half, if you look at 0 you have minus 1 and half you have positive value. So you cross x-axis at least one times. And by intermediate value theorem again you have to come down, so at least one time. Okay. So at least two roots guaranteed by intermediate value theorem. But it may have more than two roots, may have infinitely many roots. But guarantee, if you ask me, it may happen like this. So it is like oscillate like that. No issue. But guaranteed one is at least two roots. So the at least two root is the correct option. So let me see, the option is so the option number the third option. Okay. So third option says there are at least two t's such that ft equal to gt. Yes. एक बार यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होने का मतलब ft equal to gt, and there will be another zeros will be here at ft equal to gt. So that's a simple question. I mean, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजे थे मुझे lot of
बहुत बार उन्होंने भेजा है, तो चूंकि मेरे पास करेक्ट क्वेश्चंस था नहीं, सो आज ही किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा एंड बहुत रिक्वेस्ट आया कि सर थोड़ा कर दें, सो इसलिए मैं इतने रात को आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ओके, बट एनीवे चलो, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन मैट्रिक्स से भी कुछ बच्चों का इसमें था रिक्वेस्ट। ओके, लेट मी राइट दैट। व्हाट इज द क्वेश्चन इज, this question was also again so very simple, so just let me write things easily. Okay. So question there, here it is about you have a function, you have a matrix, and then rank non-zero eigenvalues they have given you, and then they are asking about the rank. Okay, so the question is, I don't know this numbering is, anyway, that's not my important. So A is n cross n matrix. So the set of all non-zero eigenvalues has exactly r elements. ठीक है? So okay. So if you look at the spectrum of A means the collection of eigenvalues of A. On that eigenvalues, if you are looking at the non-zero eigenvalues, so how many non-zero eigenvalues they are saying? It has all its non-zero eigenvalues are exactly r elements. ठीक है? तो इसमें r नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं, तो इसके सो r सो यहाँ से आप इतना कैलकुलेट कर लिए कि रैंक जो a का होगा ना वो कम से कम r होगा। ये कैलकुलेशन हो गया वाई बाय जॉर्डन कैनिकल थ्योरम, बिकॉज उसको आप जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो डायगोनली जब आप पुट करोगे, जब अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक्स जो बनोगे तो कम से कम यार 1 क्रॉस 1 का तो ब्लॉक बनेगा ही ना, एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कम से कम 1 क्रॉस 1 की तो साइज आई। और वैसे जितना कितना है कम से कम r जितना है आपके पास डिस्टिंक्ट है, क्योंकि इसका बोल दिया कि कार्डिनलिटी बता दिया गया है कि जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं a के वो कम से कम r है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली r बोल रहा है, एग्जैक्टली r एलिमेंट्स। सो द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरोस आइगन वैल्यू हैज एग्जैक्टली r एलिमेंट्स। तो a के एग्जैक्टली r एलिमेंट्स, r जो होंगे r नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं। तो जब उसको आप जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में जब उसको बनाओगे तो कम से कम जो डायगोनली आएंगे वो कम से कम एक r जगहों पे नॉन जीरो प्लेस आपको नॉन जीरो दिखेंगे अपर ट्रायंगुलर फॉर्मेट में। तो अपर ट्रायंगुलर कोई मैट्रिक्स है ना, और डायगोनल पे आपको r जगहों पे नॉन जीरो आइगन वैल्यूज दिख रहे हैं, तो जितने डायगोनल्स पे नॉन जीरो होंगे कम से कम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का रैंक उतना होगा। That's a simple fact. Okay, so that's answer. So simple answer, if you know the concept, is just one line thing you have to do. Okay, but for that you have to invest lot of times to go through this and that. But anyway, so let me read the options again. So rank of A is less than equal to r. If r equal to 0, then rank of A is less than n minus 1. Rank of A is greater than equal to r, and A square has r distinct नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। तो पहला ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है कि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आर, वो तो गलत। इफ आर इज इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन n minus 1। दिस इज अगेन रॉन्ग। जस्ट लुक एट द नीलपोटेंट मैट्रिक्स हुज इंडेक्स इज n, तो उसके लिए रैंक एग्जैक्टली n minus 1 आ जाता है। ओके, तो ये भी रॉन्ग हो गया। रैंक ऑफ ए इज एटलीस्ट r, जो हमने यहाँ लिखा, एंड A स्क्वायर हैज r डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, ये भी गलत है। A मैट्रिक्स लीजिए जिसका दो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज 1 और -1 है, तो A स्क्वायर करोगे तो 1 1 आ जाएगा, उसके सारे जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं वो सेम आ गया, तो डिस्टिंक्ट नहीं। A स्क्वायर हैज r, उसके नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगे, बट आप बता रहे हो कि सारे सारे डिस्टिंक्ट होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट गारंटीड। ओके, इट मे हैपेंस, बट ठीक है, ये सही नहीं है। उसके बाद इसी में एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ये डिटरमिनेंट ऑफ a plus b plus determinant of a minus b. I think I should not do this problem. Okay, इतना क्वेश्चन आई थिंक एज्यूम अगर आप नेट का तैयारी कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, या आपको एग्जांपल्स आने चाहिए कि कैसे कौन सा एग्जांपल लेना है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे बनाना है। ठीक है, हो सकता है आपको नहीं आता हो, बट विश्वास कीजिए मेरे पे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है। ओके, ये जो क्वेश्चन है पार्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये आपको आना चाहिए। कभी कभी आप सुटेबल एग्जांपल्स देख लो, कभी थ्योरम्स देख लो, तो एग्जांपल ही आप ले लेके इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। स्किल अगर आपको नहीं हो तो आप मुझे बताइए और मैं डेफिनेटली कर दूंगा, बट ये मुझे नहीं लगता कि मुझे ये करना चाहिए। आप लोग को इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये क्वेश्चन पार्टिकुलर, ये ऑप्शन मतलब 4 ऐसे इस टाइप के ऑप्शन थे
और ये बहुत ही सबसे आसान सा क्वेश्चन यही था इस पेपर का। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी ने किए होंगे, बट कोई कारणवश नहीं हो पाया यार, टेंशन नहीं लेना, यहीं पे लाइफ नहीं खत्म हो जाती है, आगे और भी है, फिर से स्टार्ट करो, फिर से लगते हैं, फिर से जीते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, हो जाता है कभी कभी, राइट। फिर से स्टार्ट करेंगे जीरो से, मस्त रहेंगे, मार्क्स पढ़ रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन था, एक मैट्रिक्स दे दिया गया और एक अबाउट 20 कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, उसके 4 ऑप्शंस भी दिए गए, या तो ऑप्शन देख के एक आइडिया ले लो या सिंपल कैलकुलेटिंग थ्योरम यूज करो, वहां से आ जाएगा। इट्स अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन है, A is 2 cross 2 real matrix with determinant of A is 1 and trace of A is 3, then what is the trace of A square? अगेन ये भी बहुत इजी पेपर है, मतलब क्वेश्चन है, बट ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही कर दिया, तो ये क्वेश्चन मैं एटलीस्ट बना देता हूँ। सो A is 2 cross 2 मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, 2 cross 2 मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट ऑफ A 1 है, ट्रेस ऑफ A 3 है, then what is the trace of A square? Okay, so the trace of A square is what? Simple है, आप trace of A square के लिए अगर A square के आइगन वैल्यूज आपको पता चल गए तो निकल गए, एक आइगन वैल्यू पता है, A square का भी आइगन वैल्यूज आपको पता है, with the help of this find the eigen values of A and get the answer of this. Okay, हो जाएगा, give me the answer in the comment section, आपका क्या आंसर आया है, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको बनना चाहिए आपसे, ठीक है। ओके, देन अगेन अनदर क्वेश्चन वाज अबाउट द पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, कि इसमें से कौन, अच्छा एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, अगर किसी को आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, देखो अभी मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो मेरे पास अभी जिस जगह पे मैं हूँ आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बट स्टिल इतना रिक्वेस्ट आया है कि ये चीज को मैं ना नहीं कर पाया, तो आई थॉट कि ओके लेट्स डू दिस। तो आई बिलीव ऑन कंटेंट, कि कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, बाकी सब चीज सब्सिडरी है। ओके, तो मैं जो बता रहा हूँ आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, रिलैक्स रहना है, चिल रहना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि which of the following matrices, which of the following real quadratic forms on R2 is positive definite? So पहला quadratic form है xy, दूसरा है ये x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फोर्थ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसका एसोसिएटेड मैट्रिक्स बना डालिए, इसका एसोसिएटेड मैट्रिक्स आ जाएगा 0 हाफ और ये हाफ 0। इसके तो आइगन वैल्यूज आ जाएंगे सारे के, इसके तो आइगन वैल्यूज देखिए, इसका ट्रेस ही आ गया 0, तो पॉजिटिव आइगन वैल्यूज का तो चांस ही नहीं, दिस इज नॉट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसके भी आप निकालेंगे तो ये 1 माइनस हाफ और ये अपना 1, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। इसके लिए भी आ जाएंगे ये 1, है ना, ये एक्स वाई को अलग अलग भाग में बांटिए, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म्स नहीं। इसके लिए भी जो बनेगा, इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसका मैट्रिक्स बनेगा 1, ये हाफ और ये 0। इसका लैम्डा स्क्वायर भी निकाल सकते हो, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस प्लस डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा -1/4, ठीक है ना। तो अब इसका ट्रेस तो आ गया ये, और डिटरमिनेंट कितना गया, तो इसका ट्रेस आ गया 1 और डिटरमिनेंट आ गया माइनस, सो दिस इज डिटरमिनेंट इज -1/4 नेगेटिव। तो सारे आइगन वैल्यू आपके पॉजिटिव आएंगे, तो ये तो नहीं होगा। इसका देख लीजिए, इसका एक आइगन वैल्यू तो 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये बच गया, सो हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका आइगन वैल्यूज बाय डिटरमिनेंट ट्रेस की मदद। 2 क्रॉस 2 के लिए बोले ना, 2 क्रॉस 2 के लिए काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस के कुछ फैक्ट होते हैं, इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, तब वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपके पास होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट उस टाइप का नहीं है तो फिर यू कैन थिंक कि बाकी भी चीज़ें हैं। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि सर इसको भी आप थोड़ा सा करें। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का ऐसा जब भी मिले 2 क्रॉस 2 के केस में एटलीस्ट आप ट्रेस और डिटरमिनेंट से ऑप्शंस का आंसर दे सकते हैं कि अगर पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस होंगे तो उसके सारे के सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, है ना, मैट्रिक्स उससे मैट्रिक्स चाहिए, और उससे आप क्लिक कर लीजिए। एक जगह से ट्रेस सही आ रहा है तो डिटरमिनेंट नेगेटिव आ जा रहा है ना, और कहीं डिटरमिनेंट सही है पॉजिटिव है तो ट्रेस नेगेटिव है, तो वो नहीं हो सकता है ना। सम ऑफ 2 पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज आल्सो पॉजिटिव, सो आई कैन बी।
कॉम्प्लेक्स के भी इंटीग्रेशन जो थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी क्वेश्चंस ऐसे थे, सिंपल से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, तो वो मैं नहीं जाना चाहूंगा। ओके, वो भी अगेन आप अगर थोड़ा बहुत भी इसमें समय इन्वेस्ट किए होंगे, अपना कीमती समय, तो क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। नंबर 3 के भी क्वेश्चंस थे कि कोई भी एन इंटीजर है ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ओके, ये वीडियो थोड़ा अननेसेसरी मुझे लगता है लंबा हो जाएगा, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में ये नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को अगर लगता है ये वीडियो को फायदा हुआ है, आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँ, तो ठीक है, मैं कुछ समय के बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टिल देन और भी जो आप लोग को डाउट्स हो आप मुझे भेज सकते हैं, मुझे अगर समय मिला तो मैं डेफिनेटली आप लोग के डिस्कस करूंगा। ओके, टिल देन एंजॉय मैथमेटिक्स, बाय, टेक केयर।